हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of PRMO slash IOQM previous year question series. So guys, in this series we are solving previous year PRMO or IOQM questions. Many of you might not know कि PRMO बोलते थे इसको few years back, and after about 2021 only they started calling it IOQM. Okay, not an issue. The same, basically the बस नाम चेंज हुआ था, क्वेश्चन पेपर और यू कैन से द एग्जाम इज द सेम. ओके, सो गाइज आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट कि अब तक गाइज हमने देखो एक वन पेपर वी हैव कंप्लीटेड. Okay, from PRMO 2017 we have completed completely. You can see all the videos. ठीक है, you can check them out. And today we are going to start with the next year, that is 2018. So for the next 20-30 videos, 30 questions हम इसके अब करेंगे एक एक करके. Okay, so today we are starting with the first question. Okay, so initial questions are quite easy because they are 2 marker questions, so comparatively easy than the rest of the questions. Okay, so all right, so without wasting any time, okay, before that, before starting guys, I'll just would like to remind you, please try the question yourself first. थोड़ा सोचो उनको, then only watch the video. Okay, पॉज करके जहां पे आपको लगता है कुछ समझना है, पॉज करके खुद साथ में सॉल्व करो प्लीज. बिकॉज जब आप साथ में सॉल्व करोगे तब मैक्सिमम लर्निंग आउटकम होगा आप लोगों के लिए. इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू यू अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. डोंट जस्ट वॉच द वीडियो कि सिंपली बस देख लिया वीडियो, उससे आपको इट इज लाइक द फेक, आपको फेक फीलिंग आएगी कि हाँ समझ में आ गया, बट एक्चुअली में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा देन यूल बी फंस जाओगे वहां पे. सो जस्ट माई रिकमेंडेशन, प्लीज ट्राई टू solve the question alongside. Okay, please solve those. Okay, all right, so without wasting any time guys, let's see the question. Okay, this is our first 2 marker question guys. Let's read it carefully and make it a point to read the questions carefully guys. आधा काम आपका वहीं पे छुपा होता है. Okay, all right, a book is published in 3 volumes. The pages being numbered from 1 onwards. Okay, the page numbers are continued from the first volume to the second volume to the third. Okay, so counting continuously चल रही है. So जनरली आपके बुक्स में क्या होता है, एक बुक खत्म तो सेकंड बुक में 1 से काउंटिंग शुरू हो रही है. सो दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है. ओके, सो रादर यू कैन से कि एक बुक पूरी की पूरी थी, उसको 3 वॉल्यूम्स में काट दिया है बेसिकली. यू कैन थिंक ऑफ इट इन दैट वे, राइट. So the number of pages in the second volume is 50 more than in the first volume, and the number of pages in the third volume is 1.5 times that in the second. Okay, so guys, as I have told you that in this thing in the previous for videos as well, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको वेरिएबल्स लेट करने होते हैं, डोंट जस्ट टेक देम एक्स वाई जेड तीनों बुक्स को, है ना, एंड देन फॉर्म द इक्वेशंस, वो मत करो. ट्राई टू कीप योर वेरिएबल्स टू द मिनिमम जहां पे आराम से रख सको, राइट. सो लेट्स सी दैट. तो गाइस फर्स्ट वॉल्यूम में, okay, in the first volume let's say the number of pages are x. Okay, let there be x pages. तो सेकंड में कितने हो जाएंगे गाइस, देखो उसने बोला it's given to us second volume is 50 more than in the first volume, so the number of pages in the second volume is x plus 50, right. सेकंड से 50 ज्यादा है. and the third volume, it's given it as 1.5 times that in the second. So 1.5 time is guys 3/2 times of the second, which is x plus 50, right. So these are the number of pages in the corresponding volumes, right. ऐसा मान लिया हमने. Now what? Okay, आगे दिया हुआ है guys, the sum of the page numbers on the first pages of the 3 volumes is 1709, 1709. तो अगर हम हर बुक के फर्स्ट पेज का जो नंबर है अगर उसको उनका सम करते हैं, दोज एड अप टू 1709 और 1709. तो गाइस फर्स्ट पेज पे पेज नंबर क्या होगा, 1. फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट पेज नंबर इज 1. नाउ इन द सेकंड वॉल्यूम, सी गाइस फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर x नंबर ऑफ पेजेस थे. इन द सेकंड वॉल्यूम सो द फर्स्ट पेज नंबर विल बी x plus 51, isn't it? तो x तो पहले वाले में थे और सेकंड वाले का तो स्टार्ट हो रहा है, तो द नंबर ऑफ पेजेस वुड बी x plus 1, sorry, not x plus 51, so sorry, x plus 1, right. Okay, now guys थर्ड बुक का फर्स्ट पेज नंबर क्या होगा, पहले 2 बुक्स में कितने पेज नंबर्स हो चुके हैं पूरे. सो
कंबाइनिंग द फर्स्ट टू बुक्स, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, देखो फर्स्ट बुक में x पेजेस, सेकेंड बुक में x प्लस 50 पेजेस. सो काउंटिंग कितनी हो गई है फर्स्ट टू बुक्स में? हाउ मेनी पेजेस आर देयर? दैट इज 2x प्लस 50, राइट? दैट इज 2x प्लस 50. बट जो थर्ड बुक है उसका फर्स्ट पेज नंबर पिक करना है. सो अप टू दैट हैज हैपेंड, टू बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 2x प्लस 50 पेजेस. सो द फर्स्ट नंबर दैट विल बी ऑन द थर्ड वॉल्यूम का फर्स्ट पेज नंबर क्या होगा? 2x प्लस 50 प्लस 1, राइट? तो प्लस 1, जस्ट लाइक वी एडेड 1 इन द प्रीवियस केस एज वेल, राइट? क्योंकि फर्स्ट बुक में x पेजेस थे, तो फर्स्ट पेज नंबर क्या होगा सेकंड बुक का? x प्लस 1. Similar logic, 2x plus 50 plus 1, and all these add up to, as given to us, is 1709. So that's it. It's a very easy linear equation, right? तो बच्चों कितने x हो गए लेफ्ट साइड पे? 3x. x and 2x add up to give you 3x plus, and constant values are 1 plus 1 plus 1 3 and 53. That is adding up to 10709. So guys, that gives us 3x equal to how much? So that gives us 3x equal to 1709 minus 53, guys. So that will be 1656, right? So if you cancel 3, so you get 552. Okay. So this is the value of x that you are getting. X equal to 552, right? So guys, that means now we can see how many pages are there in each book. So in the first book, that is 552, as we got the value of x, so that implies 552. Second book में कितने हो गए? Plus 50, so that gives you 602 pages. And the third book, third volume, see x plus 50 is guys 602, right? 602 का क्या करना है? 1.5 times, मतलब 1.5 गुना, और 602 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से. सो डिवाइडिंग बाई 2 गिव्स यू 301 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 3 गिव्स यू टोटल वैल्यू ऑफ 903, राइट? 602 का आपको 3/2 टाइम्स करना है, दैट गिव्स यू 903. सो गाइज नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस. सिंपली एड दीज अप, total number of pages. So 900 plus 600 plus 500, that's add up to 2000. 52 plus 2 plus 3 is 57. So guys, you'll get the total to be 2057. So total number of pages in the 3 volumes is 2057, right? Now let's come back to the question itself. Last line हमने नहीं पढ़ी थी. Okay, do make it a point guys. Finally you're getting, जब आपके पास बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, सो डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लास्ट लाइन अगेन, कि क्या ढूंढना है ना. सो गाइज, इफ क्वेश्चन इज गिवन, इफ n इज द लास्ट पेज नंबर, ओके, last page number is going to be 2057, of course. What is the largest prime factor of n? Okay, so your n value, you can see the n value is 2057. So the prime factorization, okay, let's see, 2057. Guys, let us see one by one. 2 से divisible नहीं है, 3 से भी नहीं है, because the sum is not divisible by 3, right? The sum is 14. Then the next prime number is 5. 5 से divisible नहीं है, right? Because the last digit is neither 5 or 0. 7 पे कैसे चेक कर सकते हैं guys? You can try dividing it by 7. So 14 पे divide होगा, you'll be left with 65. 65 will go till 63, right? So 27 बचेगा. It is not divisible by 7 as well. So the next prime is 11. I guess 5 plus 2, 7 and 7, yes. So you can simply check by the divisibility by 11, right? So guys, अगर आप 11 पे divide करेंगे, you'll get, let's see, 11 पे divide करेंगे तो first digit is going to be 1, 11. So you get 95, so you will get divided by 8. 95, if you are taking 88, so 5, 80, 77, right? 187. Okay. Then further dividing, 187 is again 88. Okay. So 1 and 7 add up to 8. So alternate digits का sums का difference is 0. So 11 से further divisible है. So you can write it as 11 into 11, and 11 से आप इसको divide करेंगे, that is 17, right? That is easy. So 11 into 11 into 17 is the factorization. So guys, we are supposed to find the largest prime factor of n. So the largest
out of these is 17, right? So the correct answer to this question should be 17, right? So that would be the answer. Okay. I hope guys आपको समझ में आया ये question. So quite an easy question, right? So linear equation solve करनी है. It's all about understanding. Even someone who is not preparing for maths Olympiad should be able to do such kind of a question, right? 8th 9th में आप ऐसी चीजें पढ़ चुके होते हो, right? So quite an easy question. I think everybody should have solved this kind of a question in exam, right? अगर आपके एग्जाम में आएगा गाइज, यू शुड बी मेकिंग श्योर कि देयर शुड बी नो कैलकुलेशन मिस्टेक, जो जनरली हो जाती है बच्चों से. सो डू चेक इट अगेन. ओके, ध्यान से करो. At the first attempt itself, you should be able to get the correct answer. Okay, so just try to do it carefully so that you get the correct answer in the first attempt itself. Okay, all right guys, I hope you guys are getting this question solve. समझ में आया सबको, and I hope आप सबने साथ में solve किया, and I hope you guys understood it properly और मजा आया आपको. Okay, so we'll see you in the next video with the next question of PRMO 2018. Okay, and the another 2 marker question. And guys, again I would like to say कि अगर आप लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, if you are finding this video is useful, please suggest to your friends as well so that they are also able to get the most benefit out of it. Okay, thank you guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and bye bye. Take care guys, bye bye.